We're welcoming Vibha Rani up to the stage. Vibha Rani is an electric performer. I've seen her perform in Maithili, in English. She is a folk poet, a writer, playwright, lyricist, actor, theatre performer, and folk promoter. She has founded and initiated Room Theatre and Gali Geet to bring theatre and poetry to people, to easy reach within people. Today, she is going to run her session, Popcorn Breasts. Please welcome Vibha. Hi, namaskar everybody, and I'm very grateful to Bangalore Poetry Festival for inviting me and given an opportunity me to publish my book, which is based on cancer and experiences of cancer of 1 year. The title of the book is Samarath in Hindi and in English, Can. It is a bilingual poetry collection, and so anybody who wants to read in Hindi can read in Hindi, wants to read in English can read in English. And I'm very grateful to Dr. Chandrasekhar Kambaraji that very kindly has given his consent to release this book. So I will not waste my time, and I'm very eager to invite him. And sir, please come and release the book. Book. I think organizer will give me the books. And I would like to invite Menka Shivdasani also to come over here, and because she is from the beginning of this book. And ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ವಿಭಾ ರಾಣಿಯ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಭಾಳ ಮುದ್ದಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಯತ್ರಿ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಆ ರೋಗದ ಜೊತೆಗೂ ತನ್ನ ಒಂಟಿತನದ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂಕಲನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಥವಾ ಲಲ್ಲು ದೇವಿ ಇಂಥ ಕವಿಯತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂಟಿತನದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಆ ಒಂಟಿತನ ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಅಥವಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಇದು. ಈ ಸಂಕಲನ ಎಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಂದರೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಒಬ್ಬಳೇ ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಮಹಾರಾಜ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು, ಅದು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬಳೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದುದು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ದೇವರು, ತನ್ನ ದೊರೆ,
ತನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಧ್ವನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ, ಆಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ, ಅನಂತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಧ್ವನಿಗುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂಕಲನ ಇದು. ಈ ಸಂಕಲನ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ತಾನೇ ತನಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಆದರೆ ತನಗೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ನೋವಿನ ಧ್ವನಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯಳಾದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಳೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಅನುಕರಣೀಯವಾದಂಥ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಲನ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಭಾ ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇದರಂಥ ಉತ್ತಮ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Give a ring to that girl. Yeah, definitely, sir. She has something to say. She has already sent it. Okay. Yeah. I'll surely, sir. Thank you, sir. And it was really a lovely moment for me to get Chandrasekhar ji with us. And the process, or especially publishing this book, has why I published and why I thought for publishing. Because very first thing when I was caught with cancer, then I realized ki how we are confused towards this disease and towards the process of the entire treatment protocol. And then I found that how people are scared to talk about it. They speak on several kind of disease, but they don't want to speak, or they don't want to utter the word cancer also. So then I thought, okay, I must do something. And in the almost 1 year process, in 1 year time, almost 11 months time and treatment protocol, I was restricted, or I was confined in my home only. Doctor has strictly prohibited me to go outside. So my destination was only home to hospital and hospital to home. Then what to do? Then I started making several videos and putting on YouTube. You may find it out, my several videos also. Then I started writing poems, reading lots of books. And then I thought, okay, we must talk on cancer. Of course, this is a very serious disease, but if we don't have dialogue, we will not able to understand that what is the disease and how we will cope up, and how we will try to cope up with the disease. So these poems I have written in Hindi, and then I tried, and I wanted that it should go to to maximum people. So I requested my friends, and my friends Nigat Gandhi, she stays at Allahabad and she is mental counselor, and she very happily agreed to translate these poems. And then some of the poems, around 40 poems she has translated, and some of the poems then Vatsala Shrivastava, she herself is a very prominent journalist. She worked with Asian Age, and then another IIT graduate, Swapnil Dikshit, they had translated remaining poems. And I think that even Kambaraji has told me that he read some of the poems and he liked me. Then I thought कि मुझे सब कुछ मिल गया. And Menika Shivdasani, you must be knowing her. She is with me from the beginning of the entire publishing the book, translating the books and everything. And with and she knows me also. So I would be very grateful to Menika if she will read one poem, and if you want to say anything about the book or process or anything. Thank you, Vibhaji.
I think that applause should actually be much, much stronger because this is a woman who truly deserves it. I have known Vibha Rani for only a couple of years, but she's one of the most courageous, one of the most inspirational women I've ever met. Because the kind of energy and enthusiasm that she brings to everything that she does. You've already introduced to her. She does a lot of things with theatre, she does poetry, she does all that, and she holds a full-time job. So, in spite of all the pressures of a day-to-day, responsibilities, she manages to do so much with poetry and hasn't ever allowed cancer to get in the way. I know how traumatic that can be because I've had two scares in my life, two major cancer scares. I know how traumatized I was. And to find someone like her who has lived through it and come out smiling is just amazing. So I know that if there's ever a third time and I am diagnosed with a similar problem, just knowing Vibha Rani is going to give me the courage to deal with it. Vibha has also, I run a small poetry festival in Mumbai every year, and Vibha has added magic to it. She did an event last year for that festival. She will be doing one again this year. And you watch her on stage when she's dancing and she's singing, and you just cannot imagine what she's gone through. And it's absolutely fabulous to see that. She's also worked with, she's taken theatre to prisons to try and improve the lives of the inmates. And what she has not told you, a very important thing about this book, is that the proceeds of the sales will be going towards the welfare of cancer patients. So buy it for your friends who can read Hindi because it's in Hindi, and buy it for your friends who can read English because it's also in English. I've seen this book in PDF format. It's a real pleasure to see how beautifully it's been brought out. And I'd like to just read one poem from it, if I may. Lumps like chickpeas, kidney beans, and chana dal. There are poems in this book about how women just get on with their lives, because, okay, you've got cancer, but you've just got to do what you have to do. Because women run homes and they run families, and what is cancer? It's no big deal. You just have to do, what you're supposed to. Lumps are compared to foodstuffs. The size of chana dal, as small as green peas, or a soaked chickpea, or the size of a kidney bean, or as small or medium or large as a potato. And we eat these without a stab of terror, without wondering how we use them as similes for lumps. Perhaps lumps can't be compared easily to crocin or bicosule capsules. Our familiarity lies with potatoes, chickpeas, kidney beans, chana dal. Who doesn't know their size and form, but who knows the exact size and color of crocin and bicosules? We want our lumps to be harmonious with life's universality, so we roll out a canvas of simple similes. Canopy? Congratulations, Vibha. थैंक यू मेनिका. और ये किताबें आप ज़रूर लें अगर आप लेना चाहें. ये किताबें आपको डराएंगी नहीं, कविताएं आपको डराएंगी नहीं, क्योंकि ये कविता जो है इसका एक सीरीज़ है. दिस सीरीज़ आई हैव गिवन द नेम सेलिब्रेटिंग कैंसर. कि we'll celebrate life, thus we celebrate cancer. So no need to scare or no need to escape from this. Whatever things are here, just we have to face it. So these poems, I think that I have tried to give the life and essence of life. And here I also would like to read out one poem. The title of this poem is Waiting, in Hindi, Pratiksha. Waiting. Existence
soft dampness you granted me today. The soft dampness you granted me today, if only you had gifted it 30 years ago, I could have sung the infinite raga of life, like an elegy. Life wouldn't have knotted my life. Life wouldn't have knotted my life, a knot I cannot longer unknot. A knot I cannot longer unknot, nor knot further, nor open, nor sing. हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को. My ears have become anklets. My ears have become anklets that tinkle chum chum. As soon as my parched lips taste the moist dew of your lips, my being has started to rain chum chama chum chum. There is no balcony. There is no balcony, so I meet this rain's first fragrance. There is no balcony, so I meet this rain's first fragrance in the breeze coming through my flat's window. The clouds outside play their dugdugi, chhaptal, tabla, and khartal. The heart becomes a poet's verses. The heart becomes a poet's verse. घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा. My heart aching for my beloved. My eyelids blink and recite, who will take this message to my sweetheart? Who will take this message to my sweetheart? Existence has transformed itself into a waiting eye. Existence has transformed itself into a waiting eye. एकागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो जी, दो नैना मत खाइयो जिन पिया मिलन की आस, जिन पिया मिलन की आस, जिन पिया मिलन की आस. Thank you so much. Thank you. I think that you like this poem, और ये poem में ऐसे ही आपको प्रेम मिलेगा, जुनून मिलेगा, पैशन मिलेगा आप पढ़ेंगे तो. और अब अंत में मैं इस एक पोएम यहाँ परफॉर्म करेंगे वत्सला श्रीवास्तव और स्वप्निल दीक्षित, जिन्होंने इस किताब में कई पोएम्स उन्होंने ट्रांसलेट भी किए हैं. और वत्सला श्रीवास्तव, she is a story collector right now, and she collects the stories around the world, real life stories. And Swapnil Dikshit, he is working in Bangalore, and he's an IIT graduate and MBA degree from US. They will be performing over here on one of the poem, and the title of this poem is O Sanichar. Why this poem I have written? Because it was weekly chemo, and that weekly chemo I have decided on Saturday, because Monday to Friday it was my office, or Saturday it was my off day. So I had decided that every Saturday I'll go for chemo. So this poem is dedicated to Saturday, or dedicated to chemo day, and subsequently today is also Saturday. So it is a coincidence. So listen, Saturday, O Sanichar, from Vatsala Srivastav and Swapnil Dikshit.
So this poem is called Saturday because every Saturday she used to go for her chemo, and coincidentally it is Saturday again. So we are doing this. सुनो सनीचर, गुणो सनीचर, सुबह दोपहर और शाम सनीचर. सुनो सनीचर, गुनो सनीचर, सुबह दोपहर और शाम सनीचर. सुनो सनीचर, गुनो सनीचर, सुबह दोपहर और शाम सनीचर. राम सनीचर, आम सनीचर, सुबह से लेकर रात सनीचर. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I wanna see inside your head, yes I do. धम से दम तक, रम से रम तक, दम से दम तक, रम से रम तक, दम से दम तक, को आए सनीचर. दम से दम तक, रम से रम तक, मन बहलाने को आए सनीचर. कीमो फीमो भर्ती डॉक्टर, सुइया मास्क दस्ताने टास्क सनीचर. फीडबैक भी साथ लेकर, हर दिन हर बात में साथ सनीचर. मेरे भाई सुनो सनीचर, कब तक रहोगे यूं साथ सनीचर. सुनो सनीचर, गुनो सनीचर, सुबह दोपहर और शाम सनीचर. सुनो धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना, हे हे धागे तिरकिट. Look up Saturday. Do you count Saturday? Down and dusk every day. By Joe, Saturday. Yet another Saturday. Inhale Saturday. Exhale Saturday. To and fro Saturday. Standing up, sitting down, entertaining or a frown. Registration Saturday, chemo time on my way. Tons of shots, loads of gloves, every single Saturday. Everywhere Saturday, you coming Saturday? Hey, listen Saturday, just take off Saturday, get lost Saturday. भाई सुनो सनीचर, कब तक रहोगे यूं साथ सनीचर. सुनो सनीचर, गुनो सनीचर, सुबह दोपहर और शाम सनीचर. सुनो सनीचर, गुनो सनीचर, सुबह दोपहर और शाम सनीचर. सुनो सनीचर, गुनो सनीचर, सुबह Inside दोपहर your और head, शाम yes I सनीचर. do. Thank you. Thanks guys for the mics and everything. Thank you, Vatsala. Thank you, Swapnil. And you literally made this Saturday, celebrating Saturday, cancer, celebrating cancer. And कहीं भी मैंने अपने घर के 3 लोगों को कैंसर में खोया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर से कोई चौथा सदस्य जाए. और इसके लिए मुझे लगता है कि हम कहीं भी उसके बाद जहाँ भी जिनसे भी हम बातें करते थे,
तो हर कोई बताता था कि मेरे घर में किसी को हुआ है, या मेरे पड़ोस में किसी को हुआ है, या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को हुआ है, किसी ने खो दिया लाइफ, कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने इस किताब के ज़रिए, इस अपनी पोइट्री के ज़रिए ये कोशिश की है कि हम इससे डरे नहीं, इसका मुकाबला करें, इसके साथ रहें, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करें। ज़िंदगी एक ही है, मौत तो आनी ही आनी है, तो जब मौत आनी है, जिस दिन आएगी आएगी, उसके लिए अभी से क्यों परेशान होना, और उसके लिए अभी से क्यों डरना, और उसके लिए अभी से क्यों हम अपने आप को, हम चुप रहेंगे, हम आंसू बहाएंगे, हमारे घर के लोग भी आंसू बहाएंगे। इसलिए हम हंसें, हमारे घर के लोग हंसेंगे, हमारा आसपास हंसेगा, आप सब हंसेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट कैंसर एंड everybody can. If I can, you can, everyone can. Thank you so much. पड़ेगा तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ मैथिली में, उसके बाद मैं हिंदी में भी सुनाऊंगी। छोटी सी कविता है, चोरी चोरी चुपके चुपके। हमारे जीवन के टुकड़ा, हमारे जीवन, आप एक उस मैथिली की ध्वनि को सुने, साउंड, जस्ट लिसन एंड एंजॉय द साउंड। व्हेन आई कम हियर आई एंजॉय द साउंड ऑफ कन्नड़ा, दो आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई एंजॉय द साउंड। हमारे जीवन के टुकड़ा से हो चले हमरा सा नुका नुका का, छुप छुप का। हमारे जीवन के टुकड़ा से हो हमरा सा चले नुका नुका का, आइयो भ जेते एक टुकड़ा अलग। आइयो भ जेते एक टुकड़ा अलग, जिंदगी से किछ भ जेते खाली, किछ भ जेते खाली, किछ भरते भीतर, जरैत रहते मुदा आग, बन क समंदर, बन क समंदर। ये इंस्टेंट मैथिली ट्रांसलेशन है। Being a lady, you'll find that lady are always busy with their home chorus, their home responsibilities and everything. तो कैंसर के घर में अपनी गृहस्थी, औरतें बसा लेती हैं अपनी गृहस्थी कहीं भी। औरतें बसा लेती हैं अपनी गृहस्थी कहीं भी, मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में। मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, यहाँ तक कि सड़क और अस्पताल में भी औरतें बसा लेती हैं अपनी गृहस्थी कहीं भी, मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, यहाँ तक कि सड़क और अस्पताल में भी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सोचता है अगल या बगल। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सोचता है अगल या बगल। वे सांस लेती हैं निश्चिंतता की और सो जाती हैं कीमो के बेड पर गहरी नींद। वे सांस लेती हैं निश्चिंतता की और सो जाती हैं कीमो के बेड पर गहरी नींद। दवा काम कर रही है, मन भी कर चुका है काम, समझाकर सभी को घर के सारे सरंजाम। कहीं भी हो औरतें, कहीं भी हो औरतें, छूटती नहीं उनसे घर की रीत और अपनों पर प्रीत। जो आज इसकी हो गया ना टाइम, बस अब मैंने शुरू कर दिया है, 2 मिनट आपका लूँगी। जो इस आज के इस थीम का जो पॉपकॉर्न ब्रेस्ट, जो इस आज के इस प्रोग्राम की थीम रखी गई थी, और पॉपकॉर्न ब्रेस्ट नाम से पोएम भी है यहाँ पे, मैं उसको जल्दी से बस एक सुनाती हूँ। पॉपकॉर्न सा उछलता बिखरता ब्रेस्ट कैंसर। जब मैं आई तो पता चला कि चारों तरफ जो है वो वायरल से भी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर फैला हुआ है। तो पॉपकॉर्न सा उछलता बिखरता ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ वहाँ इधर उधर जब तब निरंतर। प्रियजन, नाते रिश्तेदार, हित मित्र, दोस्त यार,
किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी, किसी की बीबी, कोई नहीं तो अपनी पड़ोसन, कोई नहीं तो अपनी पड़ोसन। दादी नानी भी नहीं है अछूती, न अछूता है रोग। आने पर ब्रेस्ट कैंसर की सवारी, खोजते हैं आने की वजह। आने पर ब्रेस्ट कैंसर की सवारी, खोजते हैं आने की वजह। लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लेट मैरिज, लेट चिल्ड्रन, एक या दो ही बच्चे, नहीं कराया स्तनपान। डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं हैरान, नहीं पता कारण, निष्कर्ष नहीं इतने आसान। हर मरीज के अपने लक्षण, अपने अपने कारण। पूछते हैं सवाल एक जैसे, ऐसे कैसे हो गया? पूछते हैं सवाल एक जैसे, ऐसे कैसे हो गया? जवाब जो होता मालूम तो फेंक आते किसी गठरी में बांध कर, किसी पर्वत की ऊंचाई पर या पाताल की गहराई में। पॉपकॉर्न से कैंसर के ये दाने, पॉपकॉर्न से कैंसर के ये दाने। थैंक यू सो मच, थैंक यू।